So I'll repeat again to everyone 73 100 ka call which I am recommending for a hero zero trade, and we are seeing कि 40 के आसपास you can take on 40 42 40 चल रहा है, you can take on from these levels, and significant spike can be seen on the momentum side, and you can book your chucks. So now everybody got an ample amount of time to take on the trade on these levels. So it's 40, 42, near to about it's sustaining. So yeah, the target we are taking on to 70 levels and 75 levels also. But if someone wants to book in the medium term, then also they can book in the medium term. As well as we have maintained a stop loss of nearly 15 to 18 according to the risk appetite what you are looking for. So I think yesterday RK Foods was given, right? RK Foods was given as a BTST, and now you can see the price at 7% up nearly. So it was a fabulous call. The price got a dip to 30 levels, and I see uh, momentum is missing. I see a momentum. I was thinking if it goes to a single shot, but it won't happen. Okay, but still we are on 30 levels, 30 28 levels. Let's see if we can make up some money over here as well. So anyone who wants to take on the levels, you can take on the levels on dips, but maintain a stick stop loss over 15 और 18 के आसपास आप देख सकते हो. So I think the price is not working right now. It's sustaining, and the price is slowly, gradually, and staggered basis. It's going on a consolidation, as well as कि जो market का सुबह का बहुत अच्छा movement था. It's consolidating right now. तो कंसोलिडेशन में लास्ट में देर इज अ डिके, एंड वी सी price coming to 20 nearly, and I am really sad about your weekends. And I hope it would have gone nice, but I think its stop loss is still not gone. Yeah, I think if someone is aggressive and keep his stop loss to 18, must have triggered maybe. Yeah, I can say yeah. So the price has gone to 17 and 18 levels. So I think you can, if someone wants to trade on a lower channel, also will give. If there is a possibility of any trade, will give over there. But stay put right now, and honor your stop losses. We agree. We have got a stop loss here, and in the last moment, I think we got some. So that I think we should exit on our stop losses. We should honor the stop losses, and the price action is not that eminent. What we looked forward to make it to 70 levels, and we are staying exited on our stop losses. That is 18 nearly. So it's 245 right now. 245. If there is any thing coming in near term, I will recommend on the same. So if someone wants to take an aggressive bet, so you can focus on strikes which is below uh, एक 72 900 का एक कॉल है which is in the money.
and I would say कि this is a second trade what I'm converting. इट्स राइट नाउ 120 के आसपास चल रहा है, अभी 100 के आसपास चल रहा था, अभी 120 125 आ गया. बट लेट्स सी, लेट्स टेक ऑन अ बेट. एक डिप आएगा तो देन वी विल टेक ऑन अ बेट. बोलते बोलते वो 150 हो गया. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गिव अ ट्रेड ओवर दिस, बट वो बोलते बोलते ही 150 तक चला गया था. सो स्टे पुट, विल टेक अ ट्रेड नेक्स्ट time, I think. Let's wait for a while to prices, option prices to settle. Just because it's consolidating, we cannot make it in a consolidation phase. So we have seen a good. Let me take some index queries as well. In the meantime, we are analyzing some another trade as well. So I won't make it. Uh, the option pricing for. So if anyone wants to focus on a stock, so I'll give on Bajaj Finance is one of a stock which is giving a technically positivity in its chart, and a shorter momentum can be seen, but not for a 2 or 3 days views. उसके लिए नहीं है focus में, but on a shorter note we are in focus with Bajaj Finance for a momentum trade, as well as escorts also. There is a price action. uh, डेल्टा मूव दिया है उसने, प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन दिया है, एंड वी सी के अनदर अपसाइड कैन बी सीन इन एस्कॉट्स. ओके, सो एस्कॉट्स इज अवर आल्सो, या. So I understand your point, guys. I think we got a stop loss, no issues with this. It's a part and parcel. I think we have to honor our things, and if there is second trade, I'll be eager to make it. Let's wait for a moment coming. Then yes, so it's a yes, it's a position sizing you have to maintain at first. Someone who is keeping the position sizing which is very decorated, so uh, you might not feel panic over the same. उसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर कीपिंग अ सेम पोजीशन साइजिंग, सो यू वोंट मेक इट इन अ सिंगल शॉट. बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा आपका, according to your M2M. So it will not be volatile. So if you are gaining 4 or 5 trades and you are losing 2 trades, so it definitely you are in positive. But still, if on the loss side you are taking a very good position or the position sizing is being hampered, then obviously it won't make it. So as I said कि stop loss गया था हमारा, and we have honored our stop loss, but the price came up again to 30. And uh, that was what I was thinking कि the price made a dip and again it came back to 30 levels. So still stay put, and we are still analyzing to make another call. No issues for this. Yes, I think वो stop loss लेने आए थे.
So I think it's all about a market movement. It's quite tough when we see option pricing and option momentum to analysis after 2:30. Sometimes it happens, so sometimes it don't happen. So अगर किसी को कुछ करना है तो आप बुल कॉल भी कर सकते हो यहाँ से. If someone wants to make money in bull call, then also it's a nice bet you can take on. जहाँ पर आप 73,000 का कॉल जो चल रहा है 62 चल रहा है, एंड 73,100 का जो कॉल चल रहा है वो 30 रुपीज चल रहा है. तो यार रिस्क इज जस्ट फॉर 30 रुपीज. तो इफ समवन वांट्स टू ट्रेड ऑन अ बुल कॉल, सो एट द मनी का बाई करके एक ऊपर स्ट्राइक का बेस दीजिएगा. तो आपका मार्जिन हार्डली आई थिंक 27,000 to 30,000 ही लगेगा आपका मार्जिन इन्वॉल्व इन वन पेयर. सो इफ समवन वांट्स टू डू द सेम यू कैन डू दिस. 30 रुपए का रिस्क है एंड 60 का बाई है एंड 30 का सेल है. So this is a mixed trade what I gave, and I saw a very good spike. अभी 60 में दिया था. Now the option has 75 and 33, so you are still getting 7 rupees again in a single shot. And I won't be surprised it 76 price 73,000 का जो कॉल चल रहा है now it's 91. You are getting 50 rupees, मतलब you are getting 20 rupees. The stop loss what you made in the first trade you made it in second trade. So it was a quite good spike, and काफी अच्छा एक स्पाइक मिला. एंड 73,000 का जो कॉल चल रहा है वो 100 तक गया था. अभी 100 गया. आउट ऑफ व्हेन आई गेव ऑन नियरली आई गेव ऑन 50 60. Yeah, so I gave on 73,000 call on 60, and जो 73,100 का कॉल जो दिया था it was on 30. So the net cost was 30 rupees. The price option 60 से 100 हो गया, और ये जो 30 पे दिया था it went to 50. So the net profit what you get it was 30 rupees now. 30 रुपए के आपका एक प्रॉफिट आपका हुआ है सेकंड ट्रेड में. बट आई नो इट एज अ क्वाइट क्विक ट्रेड विच अगर किसी ने लिया होगा तो ऑब्वियसली मिला होगा उसको. बट किसी ने गलती से एक भी लेग ले लिया और दूसरा नहीं ले पाया तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया होगा. बट इट्स मोर और लेस अ क्विक ट्रेड. एज आई सेड कि 43,100 का जो कॉल हमने 40 में दिया था, जो 18 में स्टॉप लॉस किया, वो भी 50 तक गया था वापस. 50 एंड 55 तक गया था वापस. बट स्टिल आई विल रेस्पेक्ट द फर्स्ट ट्रेड व्हिच वी मेड ऑन स्टॉप लॉस. वो स्टॉप लॉस ही लेने आया था. आई सॉ कमेंट्स राइट देयर. नो इश्यूज. और एक कन्विक्शन डिलीवरी आइडियाज सॉरी इट्स अ ओवरनाइट कॉल वी आर गिविंग बीटीएसटी. अगर किसी को बीटीएसटी करना है तो दैट इज सीजी पावर. CMP 530 के आसपास चल रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 565. सो CG पावर यू कैन टेक अ SL ऑफ 513 एंड ऊपर का टारगेट इफ यू वांट टू टेक ऑन 567 के आसपास आप ले सकते हो टारगेट अपसाइड. एंड द मैजिकल फिगर्स इज 567. राइट. आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड कि फर्स्ट ट्रेड में हमारा आई थिंक कितना स्टॉप लॉस गया है, 22 रुपए का स्टॉप लॉस गया है. एंड सेकंड ट्रेड में इफ समवन हैज टेकन इट विल बी क्वाइट वेल, एंड उसमें आपका 40 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हुआ है. So Darshana Devi is saying I averaged and exited with 600 rupees profit. That was quite so nice. And a small profit made for Sanjay also. Very nice. Someone is saying कि अभी एंट्री करे 35 पर. सर 35 वाला 50 भी हो गया और 50 वाला वापस 35 भी हो गया. So it's more or less a price action which is a quick chuck जो आपको ऑप्शन में लास्ट में 2:30 बजे के बाद देखने को मिलता है. दैट्स द पावर ऑफ 2:30 एंड 2:45 एज वेल एज 3 PM का जो पावर है वो यही है एग्जैक्टली. एंड एक ऑप्शन वही सीधा 40 वाला 80 हो गया, 80 वाला 40 भी हो जाता है विद इन टाइम. सो यू हैव टू बी बिट क्विक व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस. दैट्स द key point you should focus on when you are opting as a option trader. So you should not regret कि मैंने डालते डालते इतना हो गया. That's the option pricing. No one can capture option pricing on a real basis. So if you see an option pricing, I recommended on 60. 73,000 का जो call था I recommended on 60, and the people who must have taken
वो सीधा 100 हुआ विद इन जस्ट 2 मिनट्स एंड 2 और 3 मिनट्स एंड देन अगेन इट केम अप 100 से वापस इट केम अप टू 70 अगेन. So that's the point in option market. नहीं. Anish is also saying exited at 55, agreed, that is perfectly, you are in profit. uh, Krishna ने also said book profit कर लिया निकल जाओ bro. Okay, okay, I think call is working. I got a lot of queries. We have, yes. So it's all about you have to be on your triggers, and when there are options, I say you can put on your triggers on a very आई सी किन्होंने कुछ लोगों ने सेकंड ट्रेड नहीं लिया है. आई एग्री. आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन मंडे एज वेल. आई बी टेकिंग सेशन ऑन मंडे, सो आई मेक इट ऑन मंडे. अभी जिसका रिकवरी नहीं हुआ है, आई थिंक इफ समवन हैज टेकन द सेकंड ट्रेड, उसका रिकवरी क्या पॉजिटिव भी रहा है एम टू एम. बट इफ someone has not taken the second trade, then it's no issues, we'll make it cover over a Monday, क्योंकि अभी टाइम नहीं है थर्ड ट्रेड लेने का. एंड दिस इज अ, आई थिंक दिस इज जस्ट अ end of our timing, where the movement is being stagnant and we don't follow much over the same. So it's near to 3. So I already said a stock recommendation of CG Power. CG Power is what recommended for a BTST. So you can look CG Power for the target of 567. So I got a query of SDFC Bank. SDFC Bank is positive and technically it has created a good chart today. एंड उसकी वजह से ही थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्पाइक आया है एंड वी हैव सीन गुड रिकवरी फ्रॉम द बॉटम. एंड एक अच्छा टेक्निकली पॉइंट सेटअप हो रहा है एचडीएफसी बैंक में. एंड यू कैन सी कि एक बुलिश एंगुलफिंग क्रिएट किया है या फिर इनसाइड बार क्रिएट करने के बाद इट इज गोइंग ओके. यू कैन so HDFC Bank, if someone wants to take on a BTST side, you can take on BTST side. बट इसका ना HDFC का कल रिजल्ट है, तो आप आई विल प्रेफर कि आप इतना एग्रेसिव या कुछ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है. सो इफ समवन वांट्स टू टेक इन कैश आप ले सकते हो, बट इफ समवन वांट्स टू प्ले इन ऑप्शंस फ्यूचर्स ओनली प्ले व्हेन दे आर योर रिस्क एपेटाइट इज ऑन अ हायर साइड. लास्ट टाइम इफ यू आर अवेयर कि एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट में एच डी एफ सी बैंक ना 7-8% नीचे खुला था, तो दैट वाज अ कंसर्न एंड वी आर मेकिंग यू ईज कि आप लोग को वो फेस ना करना पड़े. दैट्स व्हाई कीप योर पोजीशन लो or slightly less leveraged. So that is our point you should focus on. If you want to take on cash, that is perfectly fine, but don't take heavy. And result side में हमेशा pause रहना ही ज़्यादा better रहता है. That's the safest side what you can look. I got a query where someone mentioned sir रूपक जोशी बोले कि मैंने stop loss किया but अच्छा okay bought at 18 and sell at 55. Okay, so he didn't make his stop loss but he made an exit at 55. Okay, so Chetna Sahu is saying today she made a loss. No issues. It's a pass and parcel in market, and it's quite tricky when we are giving a trade after 2:30. So if someone have followed our recommendations of a day, so आपको आज बहुत अच्छा profit मिला होगा. When I am talking about before 2:30 p.m. where the session was started. आपने अगर डे में अगर we have given a full fledged calls 3 से 4 हम लोगों ने ट्रेड दिए थे कॉल में, which gave a very good profit in day time. And after 3:30, that's fine. The market movement has been saturated and we see a lot of so it's 3 p.m. right now. I won't be uh, keeping you guys engaged over the same. So someone wants to focus on consumer consumer durable stocks, so you can focus on Titan. एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट है, एज वेल एज आईटीसी ऑल्सो अ टेक्निकल पॉइंट. या दैट्स फाइन इफ यू टेक ऑन आईटीसी.
HUL भी बहुत अच्छा लग रहा है, टाइटन भी अच्छा है, M&M and मारुति. So I'll repeat on the stocks: ITC, HUL. So these are the peers, ITC and HUL. As well as someone wants to take on Titan, so that is also a good recommendation. If someone wants to take on Titan, that is perfectly fine. एंड भारतीय एयरटेल में एक गवर्नमेंट का कुछ स्टेक सेल का न्यूज आया था आई थिंक. सो थोड़ा अवॉइड करें. इफ समवन वांट्स टू एंटर, अभी मत करें. इफ समवन इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, दे कैन मेक एन एग्जिट एंड बुक योर प्रॉफिट्स. दैट्स परफेक्टली फाइन. और कोई अगर थोड़ा एग्रेसिव है, उसको रखना है और एक अच्छा मूव चाहिए, तो हो सकता है कि एक अच्छा मूव मिल जाए, बट इट विल बी ऑन अ स्लो एंड स्टैगर्ड basis. We won't be making up much. So that's it from my side. I gave a stock recommendation, gave a index trade, as well as gave a BTST call. So that's it from my side. All I think consider it as a negative. That will, yes. Yes. So I'll cover one of the aggressive query. I will cover one of the aggressive query, that is Gale. Okay. So I'll take on Gale. Just a minute. So on the technical ground, I will say Gale is. Let me take on the charts. So Gale is getting some profit booking at first. ऊपर से थोड़ा सा profit booking मिला है. एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो यहीं पे सेल हो गया था 9:15 पे ही, आज का मतलब कल का दिन स्टार्ट में ही. बट इफ यू हैव स्टिल होल्डेड दिस स्टॉक और यू आर स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक, तो यू कैन स्टिल लुक फॉर अ सपोर्ट ऑफ नियर टू अबाउट 195 के आसपास. 195 193 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं. अगेन द हाई कैन कम अप टू नियर 215. सो दैट्स द एग्रेसिव क्वेरी ऑफ द डे. So Ayush, you give your hand when you come up in a next session of mine, where I'll be giving you the secrets of the trade, how to take take, and what are the secrets what we count on to take a perfect trade. So you must be seeing कि मेरा last week में 5 session थे, and all my 5 sessions were in profit. So today it might go wrong. That is quite the thing in the market, which is neutral. So I'll share the trade. Give me hand when I'll pin you guy Ayush. So I'll give you a secret. Don't worry about it. If you are asking reason behind the trade, I'll give you. No issues. So I'll be starting the session next week and ending the session next week as well. So thanks everyone. Enjoy. Yeah.